आगे कौन होता कि आम कहते हार्ट अटैक बा कार्डियक अरेस्ट बा हृदरोग वृद्ध काल बा एडवांस एज रे होता किंतु नाउ द चेंज हैज कम जे बर्तमान आम इवन यंग लोक मानकर हार्ट अटैक बा सडन कार्डियक डेथ माने काम करुवे हठात पड़क मरीजे यही अवस्था आम देखुचु। एगुड़ाक मेनली हूँ आमर लाइफस्टाइल चेंज उपरे मेनली यहाँ बेस कर आगे आम्भे मैंने बेसी फिजिकल एक्सरसाइज करुले बर्तमान कौन होची आमर फिजिकल एक्सरसाइज कमी जाउची वी आर बिकमिंग मोर सेडेंटरी वर्कर्स एलोंग विथ दैट आमर फूड हैबिट हैज कंप्लीटली चेंज्ड आम मैंने बेसी फैट ऑयल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द ट्रांस फैट जोटा को आम कहे फास्ट फूड सेटा आम मन बेसी प्रोब्लेमेटिक होची आमे ताको खाऊचे दोज आर हैविंग मोर ऑफ कैलोरी वैल्यू बट it has its own debilitating effect of initiating atherosclerotic changes in the blood vessels which is mainly important for the cardiac problems जेतबले ब्लड भेसलटा ये जो फैट आम खाऊे से ब्लड भेसल भितर एरिया रे रही जाए रहीकि ब्लड भेसल जो कंड्यूटर जो कम्प्लेक्स माने ब्लड प्रेशर बढ़िले से फुल पुणी कमिबो सेटा हुएनी so it goes for blood pressure followed by heart attack. Second point है आमर चेंज ऑफ लाइफस्टाइल चेंज जोटा आमर मेनली हूँ सेडेंटरी वर्कर आम जी कंज्यूम करते कैलोरी से आम बर्न आउट करूने से फिडअप होकर रही जाऊँगी तापर एबे गोटे देखा यंग एज रे ड्यूरिंग एक्सरसाइज वी सडनली फॉल डेड जोटा कि बहुत बड़ बड़ एवं सेलिब्रिटी मानकर दिस इज मेनली हैपेंस बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन वी आर डूइंग एन एक्सरसाइज वी आर नॉट बैलेंसिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड द डिमांड सप्लाई एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ आवर न्यूट्रिएंट दैट मीन्स ऑफ द ऑक्सीजन इज नॉट देयर कारण आम जो एक्सरसाइज करते आम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ी जाऊँगी एंड वी आर गोइंग फॉर एन ऑक्सीजन डेप्थ सो व्हेन दैट थिंग कंटिन्यूज फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड दैट डेप्थ ऑक्सीजन डेप्थ बिकम्स ए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर ए डेथ ऑफ द हार्ट मसल्स व्हिच वी टर्म इज अ सडन कार्डियक डेथ यूजुअली आफ्टर 2018 concessions conference we have taken it as this myocardial death by myocardial infarction we have already taken up as 2 points myocardial infarction and myocardial injury this is because in a older age groups we are getting heart problem in a younger age group we are due to our professional and environmental strains we take up the hypertension or blood pressure we are more amenable to blood pressure along with that more of the fat and trans fat and carbohydrate it also precipitate about our type 2 diabetic these hypertension and diabetic they are the precursors or the precipitating factors for all these things besides that amar kidney function upare भी आम बर्तमान ये दौने आमर जो good amount of fluid नवा कथा we are always restricting the fluids or whatever we are taking the fluids we are taking the not the plain fluid that is saccharide fluids or the cold drinks ityadi जोड़ा को also contains a good amount of carbohydrate which also is a precursor for our diabetics so most thing is that we have to make a change of lifestyle we should go for more of physical exercise reduce the animal fat or animal meat, go more towards the vegetarian diets and while we are sitting and working on the table because of our sedentary working position, every half an hour to 15 minutes we must make a stroll so that there is pulling up of the blood in the legs leading to this thromboembolic phenomenon will be less. Thank you.